Hello. Okay. So we wait 1 or 2 minutes, then we will start today class. हेलो, दीपक आवाज जा रही है? Yes, sir. Okay. So just we wait 1 minute, then we will start today class. Just allow some student are in meeting. What we have discussed in the previous class, I think it is voltage regulation of the transformer. Is not? Hello. In the last class, we have discussed voltage regulation of the transformer. So have you practiced some numerical problem on the voltage regulation? It will be simple numerical practice based on the formula whatever we drive for the voltage regulation in the previous class and for the zero voltage regulation and maximum voltage regulation condition. So today we are going to discuss the transformer losses and efficiency. Okay. What are the various losses take place in the transformer and how we can find out the efficiency of the transformer. So what are the losses take place in the transformer? Core loss, iron loss. Core loss, iron loss, and other any losses take place in the transformer? Copper loss, steel loss. One by one. Yeah. So copper loss. Copper loss, exactly. Hysteresis loss. Hysteresis loss. So eddy current. Eddy current loss. Steel loss. Steel loss. And any other losses? And so losses due to vibration. So Yeah, vibration or due to dielectric materials in the transformer. Okay. That in oil, transformer oil and transformer tank. Okay. So mainly these are the losses take place in the transformer where we generally classified and concerned about the two losses. Okay. Other losses may be very small compared to these two losses. So maybe neglected of the other losses, just like as a
ST load loss, ST loss, and dielectric losses. Okay, that is very small compared to the power rating of the transformer. Okay, so mainly we concern about the two losses, that is ohmic losses, and some other students are telling me that the core losses, iron losses, and hysteresis and ED current losses. Okay, so actually core loss and iron loss are the same, and core loss consists the two losses. That means one is your known as hysteresis loss, another is your ED current loss. Okay, so hysteresis and ED current loss consist in the core of the transformer. Is it not? Or you maybe say that the core loss is also known as the iron loss. Okay, so mainly our concern is about these two losses, that means core loss and ohmic losses. Okay, how you can find out the core losses and ohmic losses? We already, I think, explained in the test of the transformer also. Is not? How we can find out the core losses? We already discussed in the test of the transformer, that means no load test and short circuit test. Okay. We already discussed now. I will just maybe recall, that means the no load losses can be find out with the help of no load test on the transformer, and ohmic losses at rated current, that means short circuit test of the transformer. Okay, so that is the ohmic loss I square R loss of the transformer. So just be concerned about here today, that means transformer losses and efficiency of the transformer. Okay, so just concern about these two losses, mean core losses and ohmic losses. Okay, and other losses you already mentioned, that ST losses and some part of dielectric losses, that is very small, so that we are not considered, that may be neglected compared to the power rating of the transformer. Okay, so core losses consist of two components, that means hysteresis loss and ED current loss, that will be take place in the core of the transformer. Okay, so hysteresis loss can be represented in the form of that is directly proportional to the frequency and maximum flux density of the core. Okay, so core losses can be represented as the some constant, that is kh, frequency, supply frequency, whatever we supply in the transformer, and maximum flux density of the core, that means P suffix m to the power x, and ED current is represented as P suffix P, that is K and F square, frequency square, into B maximum flux density square. Okay, so KH and KE is your constant quantity of the transformer, that is mainly depends on the volume and the quality of the material used in the core and the unit used. Okay, so this KH may be mentioned in your numerical problem for a particular transformer. Okay, that is, since the transformer is already designed, so whatever the material used, there constant parameters given to you. For other parameters you have to find out. Okay, so KH is mainly depends on the what types of material used and quality and unit used, and similarly KE, proportionality constant of the ED current, okay, is also depends on the volume of the core and the lamination of the thickness. Okay, lamination of the thickness, whatever the material used and the unit used. Okay, so these two constant, that means hysteresis loss constant, proportionality constant, and ED current proportionality constant. Okay, these are constant parameter of the any particular transformer that will be provided to you for any numerical problem. If you solve for find the other parameter, that means the hysteresis loss and ED current loss. Okay, so you have to just concern about the
frequency and maximum flux density of the transformer, and x, maximum flux density to the power x, that is x is nothing but some known as the Stephen's constant value. Okay, that is vary from 1.5 numerical value to 2.5 depending upon the magnetic property of the core material, whatever magnetic material used for design the core material. Okay, so according to that, a Stephen constant value may be changed from 1.5 to 5. Generally 1.7 is used. Okay, so you have to concern about these parameters, that means x. Okay, and next, if you want to express these losses, that means core losses, hysteresis loss and eddy current loss in terms of voltage. So how you can express these hysteresis loss and eddy current loss in terms of voltage? You have equation, that means induced EMF equation in terms of maximum flux density. So if we find the value of maximum flux density in terms of voltage and put in this equation, then we can express this hysteresis and eddy current loss in voltage. कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? हेलो, Yes, sir. क्या था वोल्टेज का इक्वेशन? पुट करो, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. That is V equal to 4 EMF induced equation. What is the EMF induced equation? 4.44. Hello. वोल्टेज इक्वेशन ध्यान में नहीं है. The voltage equation, EMF induced equation in the transformer. We already derived in the starting class. किसी को भी ध्यान में नहीं है? V equals to IR. V equal to IR. 4.FN5. 4.4 FN5. FN5. Okay. So F is your frequency and N is your number of turns and phi is your flux. So flux can be converted into maximum flux density into area. Is not maximum flux density of the core, that is flux by area. So flux can be converted in maximum flux density, that means maximum flux density into area, and just find out the maximum flux density from that equation. You always keep in your mind the EMF induced equation. You all times use this equation whenever you discuss the transformer, any parts of the transformer. You must be known to you this is standard equation for the EMF induced in the transformer. 4.44 frequency, number of turns and flux. Okay, and if you discuss about or talk about the primary, then number of turns put to N1, and if you talk about the secondary, then you just put to N2. Okay. And maximum flux density, that will be flux can be converted into maximum flux density into area. So just find out the maximum flux density value in terms of voltage. कितना हो जाएगा? फ्लक्स को लिख सकते हैं ना, फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया. तो जस्ट पुट करो जहाँ पे फ्लक्स है वहां पे फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, बी मैक्सिमम इनटू एरिया ऑफ द कोर. तो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? V by 4.44 into frequency into number of turns into area. होगा कि नहीं? जस्ट सॉल्व करो उसको. And put the value of maximum flux density here in this equation. Then you can just express the hysteresis and eddy current loss in terms of voltage.
So the KHF Vx divided by 4.44. KHF maximum flux density Uh, equal to कितना हो जाएगा 1.44 frequency into number of turns into area to the power x. नहीं yes, sir. तो क्या हो जाएगा 4.44 कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए. उसका कोर क्या होगा और कोर एरिया ऑल्सो कांस्टेंट होगा. नंबर ऑफ टर्न्स एंड ए को भी हम लोग कांस्टेंट केस में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मींस क्या हो जाएगा के एच. अब क्या बच गया, अदर टर्म्स क्या बच गया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी इधर बाहर में और 1 बाय फ्रीक्वेंसी टू द पावर एक्स एंड v टू द पावर एक्स. तो कितना लिख सकते हैं के एच इंटू वी टू द पावर एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी कितना होगा So 1 minus x, sir. 1 minus x. Okay, so final derivation for the hysteresis loss is equal to kh v to the power x frequency to the power 1 minus x. Is it clear to all of you? Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, so just similarly find the eddy current loss in terms of voltage and frequency. Just simplify the second equation. Just tell me. Simplify the second equation for the eddy current loss in terms of voltage and frequency. So K into V square. K into V square. सबको सॉल्व किया ना? Yes, sir. यही हो. वहाँ पे जाना था एक बार कंप्यूटर लैब में, फिर क्वेश्चन कैसे अपलोड करना है वो क्लास में होता है. आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आके आपको बता. ठीक है, सभी को सॉल्व कर लिया ना? एडी करंट लॉस इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर. सभी कहा गया? एक स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, बात बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो, एक ही स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हो क्या? समझ नहीं कर रहे हो? Sir, K into V square आ गया. आ रहा है ना? के ई पी इक्वल टू के ई इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की जगह क्या रखना है? वी बाय 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कोर एरिया. ओके, उसको जस्ट सिंप्लीफाई करो. क्या जिस तरह से उसमें किया था कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा. फ्रीक्वेंसी स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट वी स्क्वायर बचेगा नहीं. सो के वी स्क्वायर. Okay, so this is the final equation for the core loss. Just tell me in the hysteresis and eddy current loss. KH V to the power x into frequency to the power 1 minus x plus Ke V square. So total core loss can be represented as in hysteresis and eddy current loss KH V to the power x into frequency to the power 1 minus x plus Ke V square. Okay, so this is the final equation for the core loss. Okay. And second one, what is the ohmic loss? So you may know that
Ohmic loss is the I square R loss when the transformer you apply the any load, that means whatever the current flow in the load. So take place the ohmic losses as considered at I square R loss. Okay. So just we consider these two losses in the transformer, that is core loss and ohmic loss. Okay. And ST loss and dielectric loss, we already mentioned that because very small, so we do not require to consider, that may be neglected compared to these two losses. Okay. So this is all about the losses take place in the transformer. Is it clear to all of you? Or have any problem? Transformer losses. Just we move to efficiency of the transformer. Okay. So how we can find out the efficiency of the transformer? सर हिस्ट्रेसिस लॉस में सर एक्स का वैल्यू क्या होगा सर? एफ का वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर में, दैट इज 50 हर्ट्ज जो हम लोग सप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड। सर एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यस सर 1.5 टू 2.5 वैरी करेगा, अदरवाइज जनरली इसका 1.7 लिया जाता है एक्स का वैल्यू। ठीक है, यदि मेंशन किया हुआ न्यूमेरिकल में तो ठीक है, 1.6 या 1.5 जो भी मेंशन किया हुआ। यदि नहीं मेंशन किया हुआ है खुद तो स्टैंडर्ड 1.7 लेके सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, ध्यान में रहेगा। यस सर। यदि न्यूमेरिकल में मेंशन किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज यदि अपने से कंसीडर करना है तो 1.7 लेकर कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। Sir, ratio of output power by input power. Ratio, exactly, ratio of power, any system we can say that efficiency is output by input. Either if you talk about the electrical system, so output power to the input power. Okay, तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर यदि हम लोग लॉसेस कन्वर्ट कर दिए, यदि हम लोग सप्लाई हम लोग टोटल इनपुट पावर पता है तो हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं ना ट्रांसफार्मर का। आउटपुट पावर हम लोग कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स जो है। आउटपुट पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज में हम लोग वोल्टेज कितना मिला, वोल्टेज इनटू करंट इनटू लोड फैक्टर, दैट मींस VI cos थीटा। ओके, आउटपुट पावर तो वोल्टेज कितना है सेकेंडरी साइड में, टर्मिनल वोल्टेज V2, लोड करंट कितना हो जाएगा I2 एंड टोटल रेजिस्टेंस सॉरी लोड पावर फैक्टर दैट मींस cos थीटा 2। ओके, तो आउटपुट पावर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, V2 I2 cos थीटा 2 एंड इनपुट पावर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इनपुट पावर को कितना लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट का पावर हम लोग लिख लिए, यहाँ पे टोटल लॉस हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, दैट मींस ohmic लॉस प्लस कोर लॉस। तो हम लोग सिस्टम में इनपुट पावर कितना देंगे, ट्रांसफार्मर जो आउटपुट पावर मिला और उसमें जो लॉस हो चुका है ऑलरेडी, इज नॉट, लॉस होने के बाद जो बचा हम लोग को आउटपुट मिल गया, तो टोटल को यदि हम लोग समेशन कर देंगे आउटपुट पावर प्लस लॉसेस दैट इज इक्वल टू इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो जस्ट इसको लिखो मैथमेटिकल इक्वेशन में, लॉसेस में हम लोग कंसीडर कर चुके हैं कोर लॉस ohmic लॉस, उसका वैल्यू लिखो एंड आउटपुट पावर वी ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट V2 I2 cos थीटा 2। एफिशिएंसी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आउटपुट पावर दैट मींस V2 I2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस दैट मींस V2 I2 cos थीटा 2 प्लस लॉसेस में क्या हो जाएगा, कोर लॉस दैट मींस P सफिक्स C एंड ohmic लॉस दैट मींस I square R इक्विवेलेंट। तो जस्ट राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके,
So this is the mathematical equation for the efficiency of the transformer in terms of output power and total losses take place in the transformer. Okay. So output power can be represented as V2 I2 cos theta 2. So output power plus losses, that is equal to input power. That means V2 I2 cos theta 2, and this one P suffix C is your core loss of the transformer, and I square E is your ohmic losses of the transformer of the total. Okay. So all parameters I just here mention that what is the P suffix C, I2 square R, and V2 I2 means output volt ampere, and cos theta 2 is your load power factor. Okay. So this is the efficiency of the transformer can be represented in terms of output power and core loss and ohmic losses in terms of ohmic losses. Okay. Is it clear to all of you, no? Hello. Yes, sir. So just express this efficiency in terms of per unit. Can we express now this efficiency in per unit? If you want to express this efficiency in per unit, so just divide this equation in numerator and denominator by V2 I2 V2 into I2. If you want to express the efficiency in per unit system, पर यूनिट सिस्टम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं दैट मींस रेटेड द रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट पे ओके तो जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v2 into i2 just divide this equation and simplify. इस इक्वेशन में यदि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में v2 i2 से डिवाइड करेंगे v2 into i2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा cos theta 2 divided by cos theta 2 divided by cos theta 2 cos plus plus PC by 2. PC by v2 i2 plus this by v2 i2 नहीं Yes, sir. तो cos theta 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोड पावर फैक्टर एंड इसको भी लोड पावर फैक्टर एंड ये हो जाएगा कितना कोर लॉस इन पर यूनिट एंड दिस वन इज योर कोर लॉस इन सॉरी ओमिक लॉस इन पर यूनिट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ओमिक लॉस को भी तो किसी भी टर्म में दिया यदि लॉसेस तुमको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है पर यूनिट में एंड फाइंड आउट करना एफिशिएंसी देन जस्ट एंड पुट ऑन दैट फार्मूला फॉर द इन पर यूनिट ओके इफ find out in this term that means v2 i2 then you can just use this formula. So you have to remember all the formula and the all the parameters for how you can represent the efficiency. Okay. And if suppose that efficiency again simplify in another way, so how you can write here that means output power can also be written as the how much. If we simplify this equation in other way, then how we can write this output power equal to input power minus losses. यदि कोई दूसरे पैरामीटर में दिया हुआ है दैट मींस इसको हम लोग आउटपुट पावर को लिख सकते हैं ना यदि लॉसेस दिया हो तो इनपुट पावर यदि हम लोग को पता है यदि इनपुट पावर दिया हुआ है अभी यहाँ पे हम लोग किस में कन्वर्ट किए आउटपुट पावर में कन्वर्ट किए नहीं इफ यू नो all the output parameters and losses that means output voltage and load current. Okay, if you want to express this efficiency in terms of input power, how we can write and losses, that means this output power can be written as input power minus losses. लिख सकते हैं कि नहीं एक ही चीज तो है तो इनपुट पावर Yes, sir. माइनस यदि जो लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा आउटपुट पावर. तो यदि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनपुट पावर माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर तो क्या हो जाएगा So Input- 1 minus losses. 1 minus losses by input power.
नहीं, तो इसको जस्ट फॉर्म में ध्यान में रखना है कौन से न्यूमेरिकल में किस तरह का पैरामीटर्स दिया हुआ है. तो इफिशिएंसी कैन आल्सो बी रिटेन एज 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. ओके, यदि इनपुट पावर दिया हुआ है तो इनपुट पावर में कन्वर्ट कर लेना, यदि आउटपुट पावर दिया हुआ है तो आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर लेना. ठीक है, एक दूसरे को जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है इक्वेशन को. मेन तो यही है कि आउटपुट बाय इनपुट पावर होना चाहिए. ओके, तो सेम चीज यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस लॉसेस को कितना लिखेंगे, कोर लॉसेस इन पर यूनिट प्लस ओमिक लॉसेस इन पर यूनिट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, लोड पावर फैक्टर पर यूनिट इंटू I2 by I2 dash by I2 whole square plus ohmic losses in per unit plus core losses in per unit. ओके, तो जिस फॉर्म में तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी में कन्वर्ट करना है, या पैरामीटर सपोज करो कि पर यूनिट में दिया हुआ तो पर यूनिट में ही पुट करना है वैल्यू ना. यदि एक्चुअल यूनिट में दिया हुआ है दैट मींस आउटपुट और लॉसेस में, तो उसमें पुट करना है. ठीक है, नेक्स्ट just we want to find the condition for the maximum efficiency. What is the condition for maximum efficiency of the transformer? So this is your efficiency equation, and just find the what is the condition for maximum efficiency. So we already discussed in voltage regulation how we can find out to maximum and the minimum of any equation. So what is the variable here? That means load current. Okay, is not load current of the transformer, that means I2. Okay, so यदि इस इक्वेशन को हम लोग I2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इक्वल टू 0, and if we simplify then we will get the condition for the maximum efficiency. नहीं, तो इस इक्वेशन को जस्ट डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू I2. वेरिएबल क्या है, लोड पावर फैक्टर. इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, लोड करंट वेरिएबल ना. लोड पावर फैक्टर तुम्हारा मेंशन क्या हो रहा होगा, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मेंशन क्या हो रहेगा. तो ये जो इफिशिएंसी वैरी करेगा वो किस पे करेगा, लोड करंट पे. ओके, सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू लोड करंट एंड इक्वेट टू 0. ओके, and if we simplify this equation then we will get the condition of maximum efficiency. So just differentiate and tell me what is the actual condition for the maximum efficiency. सर पावर फैक्टर भी तो वेरिएबल है सर. पावर फैक्टर वेरिएबल कैसे रहेगा, किसी भी लोड का पावर फैक्टर स्पेसिफाई किया रहेगा ना कि इसका तो पावर फैक्टर कितना है. सो पावर फैक्टर इज जनरली स्पेसिफाइड. ओके, फैक्टर इज नॉट कांस्टेंट. पावर फैक्टर यदि स्पेसिफाइड किया हुआ है किसी पार्टिकुलर लोड का, then only variable is your current. Okay, कोई भी मतलब पावर फैक्टर यदि तुम लोग पावर सिस्टम आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे उसमें देखोगे, जैसा कोई भी सप्लायर कंपनी नहीं चाहता है कि बहुत पुअर पावर फैक्टर लोड यूज करे कोई कंज्यूमर. ओके, लोअर पावर फैक्टर यूज करने से क्या होता है, केवीए रेटिंग इंक्रीज कर जाता है. दैट यू मे बी स्टडी इन पावर सिस्टम distribution and transmission discuss. Okay, so power factor is standard. You have to maintain 0.7 and 0.85. That will be at most near to unity. So just differentiate this equation with respect to current and tell me the equation. What is the equation? डिफरेंशिएट करो, That PC equals P ohmic loss. डिफरेंशिएट करो.
कितना आ रहा है? Sir, core loss equals ohmic loss. कोर लॉस इक्वल टू ओमिक लॉस। सभी का हो गया? सभी को डिफरेंशिएट कर लिया इसको करने के बाद सभी कोई सॉल्व किया ना? एक स्टूडेंट किया है। क्या हो जाएगा? I2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो I2 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? x बाय वाई का फॉर्म में रहता है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग? ध्यान में रहता है तो जैसे एक्सप्लेन करो तो कैसे आएगा इतना? क्या करना है? सिंपली डिनोमिनेटर पार्ट जो है हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? x बाय वाई के फॉर्म में रहता है तो Sir, x dy minus y dx by x square. एक्चुअली denominator. डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर में देखिए न्यूमरेटर में कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट जो भी है, ठीक है? I2 के रेस्पेक्ट में करना है। क्या बोल रहे हैं? सर वो v u by v सर वो u by v डिफरेंशिएट है करते हैं जो सर भी डिनोमिनेटर जिसमें भी पैरामीटर x by y या u by v जिससे रिप्रेजेंट करेगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट का क्या होता है? होल स्क्वायर नहीं, यस सर और डिनोमिनेटर का जो है v जो नीचे या u या v जिसमें भी रिप्रेजेंट करे तो उसको ले लेते हैं साथ में और इसको फर्स्ट वाला को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये सेम रह जाएगा एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? I2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v2 cos थीटा 2 नहीं माइनस ये वाला टर्म रह जाएगा न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का v जो भी है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक टर्म ये v2 cos थीटा 2 नहीं, और ये कोर लॉस कांस्टेंट है, कोर लॉस कांस्टेंट ये इसका कांस्टेंट का डिफरेंस 0 है, इसका कितना हो जाएगा? 2i re2 नहीं, एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सबको सॉल्व करो and equal to 0, so this denominator part is equal to 0, that means क्या बच जाएगा? this term into v2 i2 cos theta 2, तो just simplify करो minus this term v2 i2 cos theta 2 into v2 i2 cos theta 2 plus 2 ie re2, so just simplify, that means I think if you simplify that means core loss and ohmic loss दोनों equal हो जाएगा नहीं, core loss and ohmic loss equal हो जाएगा। That means we can say that when the ohmic core loss is you already know that the constant value, so when the ohmic loss is equal to the core loss in the transformer, at that instant the efficiency of the transformer is maximum. Okay, so what you have to remember this condition, at which condition we will get the maximum efficiency of the transformer. Okay, so if you simplify this, then you will get the almost core losses equal to ohmic losses. So what is the maximum value of the efficiency? Maximum. Sir, v2 cos phi by v2 i2 cos phi plus 2p. So that means just you have to put this value, ohmic loss is equal to core loss in actual value of the efficiency, is not. just उसमें put कर देना है।
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कोर लॉस इक्वल टू ओमिक लॉस वहां पे पुट कर देना है। ये एक्चुअली कंडीशन है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, एंड मैक्सिमम वैल्यू जस्ट इफ यू पुट दी this core loss equal to ohmic loss. Okay. Okay. So that means यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, I2 स्क्वायर इस इक्वेशन से कोर लॉस इक्वल टू ohmic loss इक्वल टू दैट मींस कोर लॉस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कट दिया ना, तो एट I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोर लॉस डिवाइडेड बाय Re2. ओके, so you may be just convert in the KVA form. Okay, KVA at which